This is your channel, Dark Justice, and today I'm going to say about a man who is a mental patient and needs to be placed in a straitjacket and in one of the cells of the mental hospital. And his name is Bibi Netanyahu, a Polish refugee. A fugitive, one of the dirtiest, one of the filthiest, one of the cruelest person on earth. You have millions of Hitlers and you have come out of this man. You see now, he is not listening to anybody, although he has lost the war everywhere, because it's not his. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים. Children is not his son, is not his daughter, not his wife, not his sister, not his, mother-in-law. It's none of his, blood relatives who are dying and being killed like sitting ducks. And you will see that the funeral after funeral after funeral, even the chief of the army staff of the Israelis, is got muscular dystrophy. He can't raise his hands by saluting, all those caskets and coffins in the graveyard of Palestine. So now occupied by these colonizers. The last farewell. Young lives cut short on the front lines in Gaza, in the bloodiest day for Israel since the ground invasion began. 24 soldiers killed, 21 of them in a single attack, about 600 meters from the border. According to the Israeli military, they were hit by rocket-propelled grenades while rigging buildings for demolition. The impact caused the explosive to detonate one after the other. The buildings collapsed on the soldiers. A cloud of smoke and debris filled the Gaza skyline. The army says that rescue operations took several hours. Around the country, people are getting to grips with the rising toll this war is taking. The price of war, which is horrendous and difficult, but I think Netanyahu's right. You can't leave. You have to win the war, and you have to get rid of Hamas and make Gaza safe for us. Otherwise, we have no place to live. Israel's chief of staff, Herzel Halevi, visited the site of the attack. His message: Israel will learn from its mistakes and adapt its tactics to what has become a guerrilla warfare. The fight will be long and there are many challenges ahead of us. We are rotating the forces and changing our tactics, as we know the reservists will be needed again. The attack happened as Israel focuses its firepower on the southern city of Khan Yunis, hometown of Hamas's Gaza leader Yahya Sinwar. The military says it's the last stronghold of Hamas in the Strip. We continue at this time in the spirit of the fallen to complete the tasks and do everything that is required. Our forces operate deep in enemy territory. In Khan Yunis, fighters from the paratroopers, the 7th Brigade and the Givati Brigade are operating in the entire southern region. Support for the war remains high among Israelis, even at a time when Prime Minister Netanyahu's popularity has plummeted. According to the latest polls, only 30% of Israelis see him fit for the job. The Prime Minister is also under increasing pressure to bring the captives held in Gaza
back home at any cost, even if it means another ceasefire or swap of prisoners. But this latest attack is also a reminder. Good afternoon, ladies and gentlemen. Apologies for the slight delay. Shalom. I'm David Mensa, Israeli government spokesman for the National Public Diplomacy Directorate in the Office of the Prime Minister. It's Tuesday, the 29th of October, day 389 of this war which was launched against us. Firstly, on the tragic fallen amongst Israel's armed forces, it is with regret that I share with you that since the start of this war, Israel's fallen soldiers have unfortunately risen to 776. Major Guy Yaakov Nezri was 25 years old and from Atalit. Major Nezri was severely wounded 10 days ago in a battle against Hamas in northern Gaza, but yesterday succumbed to his wounds. First Sergeant Naor Chaimov was 22 years old and from Rosh Ha'ayin. First Sergeant Aviv Gilboa was 21 and from Neve Tzuf. First Sergeant Nissim Meital was 20 and from Chadera. And Captain Yonatan Keren was 22 years old and from Moledet. All these boys died fighting Hamas terrorists in northern Gaza. As the Prime Minister said this week, speaking, I think, for the entire nation, we stand in awe of the heroism of the fallen, the heroism of their families put through indescribable suffering, grief and pain that cannot be described. We are in the midst of an existential war and a difficult war and a war that exacts painful prices from all of us. May our fallen be blessed and be remembered in our hearts always. Now an update from those battles in northern Gaza. Our defence forces are decisively fighting Hamas's attempt to regroup in Jabalia. Over the past day, our forces have eliminated 40 terrorists in ground and aerial strikes, taking apart. And they call themselves as Jews or Israelis. Now, because of one man, and it's a pity that millions of people living there, so much grieved, so much demonstration, so much suffering, cannot get rid of this man. So I think to be very polite but straight and practical, I think you need to put him in that jacket. All you need is 2 to 3 people who can overcome him, get him into either one of the rooms. It shouldn't be difficult for you if you can get into the Knesset and be in the meeting. Obviously, he will either go to the washroom or he will be in the corridor. Get a hold of him, put him in the straight jacket, tie him, carry all the shoulders, put him in the back of the ambulance and go and lock him up in there. And you will find peace in Hamas. You will find, Gaza will be all free and be reconstructed. People can move back into north and the center. And all that suffering and killing, and they can bury their deads in the graves from the rubble. They can start living some life. They can dig up new wells because you poison them, you close them with cement. So they can build the new hospitals, whether they are in the tents or camps, or the WHO can help, whole world can help, we can help. Millions of dollars I am ready to send. And so I don't see why on earth that Israeli women whose sons and daughters have been put in the graves now and they are grieving. Why can't they do this simple thing today? Now, I am going to say this thing and then show you that if you don't do it, then I think I can see the writing on the wall, you are finished. You won't have any home. You will be back scattered in the whole world. And as you've been expelled from 48 countries before, and now you are going to be expelled from this area you colonized nearly as planned 100 years ago, and for the last 75 years you have been. See the suffering you have caused to these in the West Bank and to the Gaza Strip, one of the largest open prison. See how you have sodomized them, how you have killed them, how you have stripped their women who said we are religious, we are not used to this thing, and your people urinated on them, raped, the women age of their mother,
they raped them, and now they are in the grave. So, in spite of that there is no sympathy for these people, but still they were your children, and you are burying them, and you can stop that. No United Nations, no America, United States, nobody else, no funds, nothing is going to do to you when you don't have even a cent in your pocket, when all your industrialists have left, when you have nothing coming. Thousands suffering from shock since the beginning of the war. मतलब हिल के रह गए, thousands of इस असाबी उससे निमट रहे हैं. Approximately 900 new injured soldiers have been evacuated to hospital since the beginning of the ground operation in Lebanon. हिजबुल्लाह ने ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 756 इजरायली फौजी ग्राउंड ऑपरेशन के दरमियान जख्मी हुए हैं. ये उनका एस्टीमेट था कि कम से कम इतने हो चुके हैं. ये कंफर्म उन्होंने स्टैट्स दिए. और आज इजराइल से क्या रिपोर्ट सामने आ रही है, वो कह रहे हैं ये तादाद 756 नहीं है, ये 900 भी एक्सीड कर गई है. हिजबुल्लाह ने कहा कम से कम 756 जख्मी हो चुके हैं, और इजराइल का कमांडर कह रहा है कि ये 900 भी एक्सीड कर चुके हैं. ये इनको सदरन लेबनान के अंदर कामयाबी मिली है. वी हैव लॉस्ट एन इंटायर डिवीजन एंड नीड 3 एडिशनल डिवीजन्स, अदरवाइज वी विल स्ट्रगल टू डिफेंड. और एक सिनेरियो ये भी बताया जाता है कि अगर इजराइल खत्म होने लगा तो अमेरिका इस लैंड को अपनी एक स्टेट डिक्लेयर कर देगी, यानी अमेरिका इसको अपनी उसी तरह 51st जो स्टेट है वो डिक्लेयर कर देगा. तो ठीक है, अमेरिका आ जाए. ठीक है, बात यह कि इजराइल तो खत्म हुआ ना, इजराइल का तो दरमियान में वो तो खत्म हुआ, अब आ गया अमेरिका, तो अमेरिका से उस हिसाब से फेस कर लिया जाएगा. लेकिन ये वाला दरमियान में तो किस्सा खत्म हो, ये प्रॉमिस लैंड, ये चूजन पीपल, ये सेल्फ डिफेंस, ये तो खत्म हो. उसके बाद अगर अमेरिका आता है तो इजराइल खत्म हो गया. अब ये मामला है अमेरिका के साथ. तो दुनिया में ये तो साबित हो गया कि ये ऑक्यूपेशन है, यानी देखें वेस्ट में सेल्फ डिफेंस का हक है, इजराइल को बिल्कुल है. वो कहते हैं कि लेजिटिमेसी है और इजराइल जो मर्जी करे क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस कर रहा है. जब इजराइल नाम की कोई रियासत नहीं है और वो अमेरिका की स्टेट बन गई है तो सबको पता है कि भाई ये तो फिर कब्जा हो गया सीधा सीधा. तो क्या लेजिटिमेसी बची है, मुझे बताइए. वो अफोर्डेबल नहीं है, वो चल ही नहीं सकता. अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर फ्लॉप हो सकता है तो वो तो कुछ भी नहीं है. उससे ज्यादा से ज्यादा कुछ देर के लिए इजराइल उस लैंड को होल्ड कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी वो नहीं कर सकता. कुछ देर के लिए वो होल्ड. का नतीजा क्या होगा, इजरायली मीडिया की जुबानी सुनिए. ग्रोथ रेट अप्रोचिंग जीरो मींस declining standard of living, government revenues and significant reduction in basic services. Standard of living वो खत्म होने जा रहा है इजराइल. बस भाई आ जाएंगे वो, लेकिन वो चलेगा कैसे उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता. अच्छा, अब जरा देखिए, साइबर अटैक्स भी यहां पर बहुत बड़े हुए. आज नाज़रीन उनके बैंक्स के ऊपर साइबर अटैक्स रिपोर्ट हो रहे हैं. इजरायली मीडिया बता रहा है कि क्रेडिट पेमेंट्स के अंदर डिसरप्शन आई है, तो ये सिलसिला भी शुरू हो गया. फिर वो बता रहे हैं कि नेवल डेविड होटल है नियर द सी ऑफ गलीली, इसको $1,800,000 के साथ बनाया गया था. इस जंग से कुछ ही देर पहले यह मुकम्मल हुआ था और अब ड्यू टू द वॉर इसको क्लोज कर दिया गया. ठीक है, यानी साइट्स इन्फ्लिक्टिंग सीरियस डैमेज ऑन बोथ एसेट्स. इजरायली फौजियों के ऊपर, गैदरिंग्स के ऊपर, मिलिट्री साइट्स के ऊपर बहुत बड़े हमले हिजबुल्लाह कर रही है. और जो सेटलमेंट्स हैं उनको खास निशाना हिजबुल्लाह बना रही है. जो इवैक्यूएशन ऑर्डर्स उन्होंने जहां पर दिए हुए हैं वो खास निशाना हिजबुल्लाह का बने हुए हैं. मिलिट्री ऑफिशियल का एक जरा बयान देखिए. We must not underestimate Hezbollah. It is a serious organization. This is a war with casualties and very difficult days. बहुत मुश्किल दिन हम इस वक्त गुजार रहे हैं और कैजुअलिटी से भरी हुई ये जंग है. अच्छा, इसी दरमियान इजरायली मिनिस्टर ने बशार अल असद को थ्रेटन किया. जरा देखिए, इजरायली मिनिस्टर थ्रेटन्स बशार अल असद. नज़ीन, हजारों इजरायली फौजियों के माजूर होने की आज बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है. पिछले ऑलमोस्ट 13 महीनों के अंदर गजा में क्या हुआ है, जो हम बहुत सारे हमले रिपोर्ट्स करते रहे हैं, आज एक कलेक्टिव रिपोर्ट सामने आई है. उस बारे में बहुत तफसील के साथ बात करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा सबूत आज सामने आ गया है जो इजराइल को इबरतनाक शिकस्त वहां पर हुई है. इजराइल के बैंकों के ऊपर साइबर अटैक्स किए गए हैं. उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो क्रेडिट जो ट्रांसफर है, वो इस वक्त बहुत ज्यादा मुतासर देखा जा रहा है. और जो इकोनॉमिक लॉसेज है उसकी बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है. किस तरह मिलियंस ऑफ डॉलर से बनाए जाने वाले होटल्स बंद हो रहे हैं, टूरिज्म खत्म हो चुका है, इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है, ग्रोथ रेट जो है वो इस वक्त मनफी के अंदर चला गया है. तो मिलिटरीली और इकोनॉमिकली दोनों लिहाज से इजराइल जो है वो इस वक्त नुकसान उठा रहा है. लेबनान के ताज़ा तरीन हमले हुए हैं और हिजबुल्लाह ने हरमीज 900, एक और इजरायली ड्रोन, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक और इजरायली ड्रोन हरमीज 900 जो
फॉर द डेकेड्स हिजबुल्लाह ये चाहती थी कि उनके पास ये हथियार है कि वो इस ड्रोन को गिरा सकें, तो आज एक और ड्रोन जो है वो गिरा दिया गया है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद ये दूसरा हरमीज 900 ड्रोन है जो गिराया गया है। और अब अंदरूनी इख्तलाफात इस लेवल के ऊपर बढ़ चुके हैं कि इजरायली सदर ने ही नेतन्याहू के खिलाफ बगावत कर दी है। तो बहुत सारी दीगर खबरें भी हमारे पास मौजूद है आपके साथ। And nothing to eat. How long are you think you are going to survive? So he's going to starve you. Why don't you dread him that he's got you out of your homes? How long will you keep living in the hotels? How long you will keep, facing these sirens? You will come into this one of the chronic depression states, and there is no treatment for that mental disease. So, put him in the straitjacket, and the reason I'm going to call this Netanyahu in a straitjacket. And the Gaza, Labnon, Iran, all the wars will stop and the world will breathe with a sigh of relief. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים. Please subscribe to this channel and leave your kind comments. Press the bell button and subscribe so that the latest vlog or the analysis reaches you in time.